for tuning into my Bollywood body. मैं आपका host Sunny with Ghulam Bhai is back. Little more handsomer, little more trimmer. Guys, make sure check out Ghulam Bhai's Instagram account, Mr. Ghulam Ahmed. He recently competed in a strongman jut competition in United States of America, and he kicked some big fat black butts there. Sorry, not the bad, but my brother won a big competition. Guys, make sure give him a shout out on your channels as well. Promote such sports on Instagram. Make sure you check it out, Mr. Ghulam Ahmed. और हमारे Instagram के account के ऊपर आप जाके देख लें My Bollywood Body. I'm following him as well. We only follow 3 guys: Ghulam Bhai, Sama Bhai, and Ritik Bhai, who's on holidays currently. On periods actually, sorry. Day 13 का workout आज आपके साथ हम share करते हैं. It's a shoulder and abs workout. It's a beginner series, but we're trying to take the series up to about 25 days. और उसके बाद हम अपनी बाकी की पुरानी जो workout routines हैं वो blend कर देंगे इसी series के अंदर. So आज 13th day है हमारा gym के अंदर. हम shoulder और abs का workout कर रहे हैं. Stretch कर लें, आपको साथ हमने काफी वीडियो share की हुई हैं. इस series के अंदर भी day 1 में हमने ऋतिक भाई के साथ share किया था how to stretch. Once you're done stretching, we're going to start with seated dumbbell presses, shoulder के लिए. Let's go, Ghulam Bhai. First exercise, we're doing 4 set 12 repetitions. See what Ghulam Bhai does when he comes down. You're like a freaking machine. I don't even have to say anything. He comes down nice and slow. See how nice and slow his arm comes, and he never drops his arms here. You don't have to do that. Go all the way back up, Ghulam Bhai. Keep it here, lock. See, he brings it up. Taps, goes back up, and nice and slow. The key in a shoulder press is not coming down. The key in the shoulder press is pressing it up and squeezing your all 3 hands and get some lots of blood and oxygen into those muscles. पहली exercise 4 set 12 repetitions and aim for a weight जिससे आपसे 12 लग जाएं, क्योंकि पहले सेट में अगर 12 लग गए तो दूसरे में आप struggle करेंगे, तीसरा और फिर eventually 4 sets. 4 set 12 repetitions के aim for about 30 to 45 second breaks in between. उसके बाद 4 sets के बाद 1.5 से 2 मिनट की break लें. Moving on to your second exercise, it's called front alternate dumbbell raises. पैरों को गाड़ के रखें, पेट को इन्वॉल्व करें. See, every time he lifts his arm up, watch. He doesn't do this. The arm is not loose. It's tight at the bottom as well. So every time you lift up, आप जो anterior deltoid आपका front का, वो नीचे से ही tight होना चाहिए. It's tight. And नीचे से ही वो tight होना शुरू हो जाता है. Rather than a lot of the times खाली लड़के ऊपर जाके नीचे tight करके आते हैं. So नीचे से tight लेके जाएं और ऊपर से tight नीचे लेके आएं. 3 set 12. 12 means 1 1 2 2 12 12. Take a break, Ghulam Bhai. So take about 30 to 45 second breaks in between the sets, and अब वही 1.5 से 2 मिनट की break हमने ले ली. ये आपकी second exercise है. Now we're going to move on to your third exercise. It's called military press or a barbell press. Front जब आपने बार लगानी है, you got to make sure आपकी elbows बाहर नहीं होती. You're not behind the neck. Your elbows are here in front of you. So सारा जो emphasis है वो आपके front, जो front है bicep का, shoulder का, उसके ऊपर ज़्यादा emphasis है. 4 set 12. जब भी आपने ये, हम आपको बैठ के इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि you're still a beginner, दूसरा तीसरा वीक है आपका जिम में. Every time you go up, आप see what he does, अपनी सर को आगे करते हैं. So every time he goes up, he pushes his neck forward ताकि उनका पूरा shoulder involve हो जाए. See what he does? पूरा shoulder involve करते हैं, rather than just यूं अन्य अंगों तुसी कर दीजिए. There is no point. You go up, push your neck forward and get your पूरा का पूरा shoulder involved into the workout. 4 set 12 repetitions. Again, ट्राई फॉर 12 नहीं होते, 8-10 से भी काम चल जाएगा, लेकिन ट्राई फॉर 12. शुरू में जितना आप ज्यादा लगाएंगे, आपके टेंडन्स आपके जो स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होंगे, ओवरऑल आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, एंड इवेंचुअली डे 50-60 के बाद जाके आप ठोक के hypertrophy मसल की कराएंगे. मूविंग ऑन टू योर फोर्थ एक्सरसाइज. स्ट्रेट बार के ऊपर इजी बार नहीं लेनी, एंड वाइडर ग्रिप. वाइडर मींस आपके जो थंब हैं वो आपके इधर पट्टों के साथ इस तरह मेजर करके आप खड़े हो. 3 set 12 repetitions के upright rows, a great exercise to target your shoulders. अब upright rows में गुलाम भाई, can you see what he does? उन्होंने अपनी बॉडी को सीधा रखा हुआ. A lot of time guys go like this. No, keep your body straight and locked. Every time you come up, you're not only targeting the anterior, lateral and the rear. Actually, जो tail head है अपना, पूरे के पूरे तीनों के तीनों rear delt को भी आप target कर रहे हैं. पूरा okay, depending on some लोग, कुछ लोग कहते हैं ये exercise तो खाली इधर के लिए, but it's mind to muscle connection. अगर आपने पूरी body को tight किया हुआ है, believe me, just doing this, you're actually working on your biceps as well, because depending on कहाँ पे blood flow ज़्यादा है. और ये जो exercise है, ये आपके लिए safer भी है. एक है close grip, इसमें आपका shoulder impinge हो जाता है. वाइडर जाएंगे, आपकी इंपिंजमेंट बहुत कम है चांसेस के, और जो ऊपर जाते हैं आपकी ट्रैश भी जो होते हैं इसके साथ. इट्स अ फुल, लाइक आपका पूरा का पूरा शोल्डर जो है ना इस वर्कआउट के बीच में आएगा. आपने 3 सेट 12 रेपिटेशंस के लगाने हैं, और आपको खाली अपने यहाँ तक, अपने चेस्ट तक ऊपर जाएं, पूरा ऊपर जाने की जरूरत जाएगा भी नहीं, जाएं और स्लोली नीचे ले जाएं. If it's a wider grip, you cannot go higher. You can't. Closer grip, you can go. The wider grip, your shoulders will get locked and your trap बीच में tight हो जाते हैं.
That's your next exercise. Let's move on to a great exercise. It's called dumbbell shrugs. गुलाम भाई आ जाए पीछे. So what's a dumbbell shrug? Shrug जो है ये आपकी जो trap का मसला है उसके लिए great exercise. Keeping your shoulders locked and drop, pull them back and nice and slow. और पैरों को टाइट रखना है, पेट को टाइट रखना है. Here you go, nice and tight. ऊपर जाना है, squeeze. नीचे आना है, stretch कराना है. ऊपर जाना है, squeeze. नीचे आना है, stretch कराना है. ऊपर जाके इकट्ठा करना है, नीचे आके चीरना है उसको. 6 सेट 15 repetitions के. 1 2 14 and 15. Good job. 15 repetitions लगाए, 30-45 सेकंड की ब्रेक. सीरियस होकर वर्कआउट करना है. ये छोटे छोटे वर्कआउट है 40-45 मिनट के. But you gotta do it right because we're adding a lot of volume into the workout, a lot of sets and a lot of repetitions, a lot of exercises into the workout. 6 set 15 repetitions के. Now one exercise we're going to share with you is called lateral raises or side double raises. Causes a lot of problem impingements if you don't do it right. A lot of the times आप देखें लड़के सीधे जाते हैं. Do not do it straight. See what he does? इनकी elbow ऊपर आती है. He's like flying. So you gotta fly. Here you go. See how he's doing? So all you're doing is just targeting. Here you go. अपना lateral head, अपने side के head को. If you are going straight, that's a straight problem, right? Going tendon. ये सीधा आपके shoulder के ऊपर problem जाती है. Nice and slow. ऊपर जाएं. Nice and slow squeeze कराते हुए नीचे लेके आएं. 3 set 12 repetitions के quality over quantity 30-45 seconds. इसमें आपको ज़्यादा weight की भी जरूरत नहीं है. ये देखिए मैं 15 पाउंड से कर रहा हूँ. Already मुझे burn हो रहा है. You just need a light weight. Lots of repetitions. पहले आप फॉर्म अपनी ठीक करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट बढ़ाएं. क्योंकि eventually we will start telling you कि अब आप अपनी बॉडी को स्विंग कराएं, अब आप ये करें वो करें. Day 13, this is great basic workouts will do wonders for your body. Let's move on and finish off your workout like we promised. It's a shoulder and abs workout. Even if you're skinny or you're fat, it's very important to work on your core. Now we're doing curl ups, baby crunches. Crunches I'm not a big fan of because आपको पूरा curl करना पड़ता है. लेकिन curl ups is you're not curling you're crunching all your body in. You're just tightening your abs, keeping your hands up, neck straight. See the speed. जितना slow जाएंगे उतना you'll feel a burn. 25 कहना बड़ा आसान है कि झटके मार के लगाएंगे it's like 2 seconds. लेकिन if you do it right, keeping the constant tension on your abs muscle, 25 के अंदर बस हो जाती है. कहते हैं ना चीखें निकलने लग जाती है. That's exactly what's going to happen to you. आपका जो ab actually काम करता है नीचे आते हुए करता है. जब ऊपर जाते हैं ये देखिए मैं slow आ रहा हूँ. मैं शेक कर रहा हूँ. शेक कर रहे हैं it's good. You're not shaking, you're not working. ऊपर जाएंगे ये आपका eccentric load हो रहा है नीचे आते हुए. इससे आपके abs बनेंगे. तो slow आपने नीचे आना ये burn शुरू हो जाएगा. फॉल जितना आप slow आएंगे you'll actually feel it. क्योंकि ऊपर जाके ना आपके सारे आपने उस मसल को टाइट किया है. जब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको खोलें, it's very hard to come down slow. Nobody comes down slow. That's why even he's shaking. If you want to make it harder, you just put your legs up. Here you go. And 4 sets of 25 reps. So 25 लगाएं, वही 30-45 सेकंड की ब्रेक 25 लगाएं और all together about 4 सेट बनाने हैं. This is about 40 से 45 मिनट का वर्कआउट है. Great exercises for your for beginners. Shoulder and basic ab workout. Guys, make sure. एक और टिप देनी मैंने. अगर आपने इससे अपने abs और recruit करने हैं तो हमने जो डंबल प्रेस की थी पहले और जो हमने बारबल प्रेस की है उसको आप बैठने की बजाय अगर आप खड़े होकर करेंगे ना आपके abs और engage होंगे. आपको यूज करनी पड़ेगी अपनी बॉडी बैलेंस करने के लिए. तो अगर if you want to use a more advanced version of the same workout, do everything standing, and then you'll utilize your core more. YouTube पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें. My Bollywood Body. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. Today we stand about 500,000 subscribers. Thank you very much. Thank you for the 500,000. हम तो ऐसे ही आम लेने आए हैं. आप ही सारा कुछ करते हैं. आप ही एडिटिंग करते हैं.